Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in theory of computation. Usual code के साथ शुरू करेंगे. TOC is all about language and corresponding converters, right? जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा कि कुछ theoretical terminologies associated with Turing machine and complexity theory हम लोग आगे के sessions में देखने वाले हैं. One by one, let us move into the topics. And in this video we'll be highlighting onto types of Turing machine. इसी चीज को आप देख सकते हो variants of Turing machine. Now ये types क्या है, variants क्या है? जैसे DFA में देखा हमने दो types, deterministic finite automata, non-deterministic finite automata. PDA के दो types, NPDA, DPDA. वैसे कुछ अलग अलग types है. And यहाँ पे जो Turing machine का block diagram है, we know that block diagram that it has an infinite tape, right? Next to that, it has a read-write head. That read-write head can be moved in right direction, can be moved in left direction. We can ask it to stay at the same position. And then वहां पे एक finite state control entity है जो कि entire operations को control करता है. हम लोग एक state से दूसरी state में move करते हैं. Something like that, right? So यहाँ पे कुछ वेरिएशंस के साथ अलग अलग प्रॉब्लम डोमेन में उन वेरिएशंस को यूज करके हम लोग बहुत इफिशिएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूरिंग मशीन, एंड दैट वी नीड टू डिस्कस अंडर दिस. सो लेट्स मूव इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स, राइट? सो यहाँ पे जब हम लोग उसके वेरिएशंस देखेंगे तो पहला वेरिएंट कम एज व्हाट? कंपोजिट ट्यूरिंग मशीन. नेक्स्ट वन इज इटरेटिव ट्यूरिंग मशीन. Next one is multiple or multi-tape Turing machine. Next is multi-head Turing machine. And the next one is non-deterministic Turing machine. अभी इन टाइप्स को जब आगे देखने जाएंगे, definitely we'll be studying them with the help of some self-explanatory diagrams. But the thing is like हर मशीन का नाम जो है वो आपको उसका नेचर बताते जा रहा है, right? So composite Turing machine, iterative, multi-tape, multi-head, non-deterministic, right? So let's move into one by one how this steps looks like, how this machine looks like, and what do we mean by their names and their variations. So चलो चलते हैं पहला मशीन, that is composite Turing machine के डिस्कशन में. So let's observe this first variation, that is composite Turing machine. Now there are certain problems जिसको हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. मतलब we can divide that huge problem into small problems, and for that smaller problem solution we can use one Turing machine. उसका outcome we can provide it to the next Turing machine. उसका outcome we can provide it to the next Turing machine, like that, and the collective solution will be able to get at the end of multiple Turing machines which are working for us, right? So Turing machine का composition करने के बाद, multiple Turing machine का composition करने के बाद, we could be able to get what? Composite Turing machine. Diagram में क्या दिखा है? Please observe. यहाँ पे एक input दिया. This Turing machine 1 will solve that problem. Smaller part of the problem will give the output to the next Turing machine. It will solve the next smaller part of that problem. Like that, multiple Turing machines will give us output in the combination form, right? And there we could be able to see that this problem is divided to be solved with different Turing machines, and input के साथ collectively ये Turing machines काम करने के बाद हमको एक finalized output देंगे. And such kind of variation of the Turing machine is known as composite Turing machine. And generally ये जब हम लोग problems को divide कर रहे हैं, so we could be able to achieve modularity in the problem solving process. कि problems को divide किया and हर problems के लिए एक module बनाया, and each and every module will be solved by one Turing machine. उस module का output is given as an input to next Turing machine. वहां पे उसके एक मॉड्यूल को सॉल्व किया, उसका आउटपुट कैन बी गिवन एज ए इनपुट टू नेक्स्ट ट्यूरिंग मशीन. वहां पे एक मॉड्यूल सॉल्व हुआ, ऐसे एंड में वी कुड गेट अ फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन इनपुट एंड फॉर द गिवन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन ऑफ दिस मल्टीपल ट्यूरिंग मशीन. एंड सच काइंड ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज नोन एज व्हाट? कंपोजिट ट्यूरिंग मशीन.
very interesting part, collection of Turing machines, right? Now, चलो next domain में move करते हैं, that is a iterative Turing machine. Now let's observe the next variation, that is iterative TM. Now iterative TM मतलब iterations ये word हम लोग कहाँ पे सुनते हैं? So you might have heard this particular word in loops. अगर कोई loop का कोड हम लोग 10 बार चला रहे हैं तो we are saying that that loop is performing 10 iterations, right? So same kind of observation you could be able to do under the heading as iterative Turing machine. इस डायग्राम को थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करता हूं क्या चीज करने जा रहे हैं. So in this case, what we are trying to do is Turing machine ने generate किया हुआ output we are feeding as input, and as the output is given back as a feedback for what next version or next iteration के लिए input, this particular machine is also known as feedback TM, feedback Turing machine, right? तो अभी ये कौन से डोमेन के प्रॉब्लम के लिए काम करेगा? ऐसे प्रॉब्लम्स जहां पे आपको मल्टीपल इटरेशंस करने हैं. मल्टीपल इटरेशंस करने मतलब you are going to execute the same set of instructions again and again but with different variety of data onto it. हर इटरेशन में अलग ही डेटा या प्रीवियस इटरेशन में जनरेट हुआ आउटपुट आपको नेक्स्ट इटरेशन में उसको इनपुट के रूप में यूज करना है. तो उस केस में इटरेटिव ट्यूरिंग मशीन्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. And generally from the data structure background you must have seen like there are certain algorithms known as recursive algorithms. So सबसे suitable machine for solving the recursive algorithm is iterative Turing machine, जहां पे output of one instance is given as a input to the next instance of the same machines, and that's why we generally call this as iterative TM. And very nicely they are working onto the recursive algorithm solving or recursive algorithm solutions को find out करने के लिए we can use this iterative Turing machine. Now okay, now the next type is we have multiple or multi-tape Turing machine. So observe करते हैं ये मॉडल को and then we'll try to understand what are the internal entities about this, right? So as the name indicates that there are multiple tapes. So we have seen up till now that the Turing machine has got only one read-write head, only one input tape along with only one read-write head, right? So input tape is considered as unlimited. When we are talking about multi-tape Turing machine, the name itself indicates that more than one tape is there. So now यहाँ पे अगर देखते हैं तो I have different set of data that can be kept onto what individual tape. So can we say that we have multiple data streams? Absolutely yes. Multiple data को manage कर रहे, right? And उन सभी टेप से read करने के लिए we have only one read write head, and that read write head is reading all the data simultaneously and passing and providing it to finite state control, right? As only one read write head is reading this information and giving for execution to finite state control, generally such kind of models are known as, अगर आप एडवांस आर्किटेक्चर में जाओगे आगे पढ़ने ही वाले हो तो उस केस में ये मॉडल को जरूर देखोगे, एंड सच काइंड ऑफ मॉडल इज नोन एज single instruction stream and multiple data stream, SIMD models, right? And they are very helpful when one algorithm has to be able to process on multiple data items, multiple data streams. So उस केस में उस टाइप के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए we can go ahead with multiple or multi-tape Turing machine. Please see and observe, क्योंकि आगे वाला जो मशीन है इसमें से ही एक वेरिएशन है, right? So this is very nicely working for
मल्टीपल टेप में से डेटा एक रीड राइट हेड साइमल्टेनियसली पिकअप कर रहा है एंड इट्स गिविंग इट टू द फाइनाइट स्टेट कंट्रोल. सो दिस इज मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन. इसको सेव करते हैं. And let's move into the next type, that is multi-head Turing machine. अभी अगर प्रीवियस डायग्राम एंड इसको देखते हैं तो एक थोड़ा चेंज दिखेगा, राइट. एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन, तो इसमें आपको मल्टीपल रीड राइट हेड दिखाई दे रहे हैं, राइट. जबकि प्रीवियस डायग्राम में देयर वाज ओनली अ सिंगल रीड राइट हेड, राइट. दैट इज व्हाट द चेंजेस. नाउ इस केस में अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो व्हाट इज द मॉडिफिकेशन दैट कैन बी अचीव्ड एंड कौन से डोमेन के प्रॉब्लम्स इसमें रिजॉल्व कर सकते हैं, प्लीज ऑब्जर्व. सो यहाँ पे each individual head is having the possibility, is having the power of reading from individual tapes, right. So what do we have is we have multiple data streams, no doubt, multiple data streams, as well as each data stream के ऊपर वर्क करने के लिए we have individual head and that head is giving the control to what, finite state control parallelly. So can I say that parallelly all these three read write head can go on working with different sets of data? Definitely yes. And that's why such kind of models or such kind of Turing machine can be used for solving or depicting the model which is known as multiple instruction stream and multiple data streams. ये सारे मॉडल के नाम आप एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ने ही वाले हो. दैट इज MIMD मॉडल को सूट करता है कौन सा मशीन, दैट इज मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन. सो ऑब्जर्व करना है पिछले डायग्राम में, इस डायग्राम में एक चेंज, मल्टीपल रीड राइट हेड इज देयर वाज अ सिंगल रीड राइट हेड एंड दैट वाज सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम. यहाँ पे डेटा स्ट्रीम भी मल्टीपल है एंड रीड राइट हेड भी मल्टीपल है. सो वी कैन गो अहेड विद पैरेलल प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ वेरिएशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन, राइट. इसको सेव करते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट डोमेन जो है उसको मतलब यू डोंट नीड अ डायग्राम फॉर दैट, दैट इज जस्ट नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइप ऑफ ट्यूरिंग मशीन, राइट. ओके, ये टाइप को हम लोगों को डिस्कस करना है, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन. व्हाट डू यू मीन बाय NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा? मतलब क्या, एक इनपुट के लिए वी कैन हैव द पॉसिबल ट्रांजिशंस इनटू जीरो और मोर स्टेट. वही चीज हमने NPDA में देखा, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा. मतलब एक इनपुट के लिए हम लोग कभी एलिमेंट्स को पुश करते हैं स्टैक पे, कभी उसको पॉप करते हैं, कभी नॉप करते हैं. सो दिस इज नॉट डिटरमाइंड, राइट. सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक TM में आपको ऐसे सॉल्यूशंस दिखेंगे जहां पे यू विल फाइंड दैट फॉर सम इनपुट, फॉर सेम इनपुट, समटाइम्स you are transiting to one state, for same input you are transiting to more state. Second, sometimes the read write head is moved towards left, sometimes for the same condition read write head is moved towards right, and for some conditions read write head you are deciding to stay at what, same positions, right. So ऐसे जब non determinism चल रहा है, so we can say that that particular entity or that Turing machine is working under the zone of non-deterministic TM, right. So ये अलग अलग variations आ सकते हैं for under the domain of variants of Turing machine, जहाँ पे multiple Turing machine का composition किया, composite Turing machine. एक Turing machine का output is given to itself in a feedback mode, then that becomes what, iterative Turing machines. Multi-tape Turing machine जहाँ पे multiple data streams observe किए with the help of multiple tape which can be read simultaneously by one read write head. Multi-head Turing machine, multiple tapes, multiple read write head, multiple instruction stream as well as multiple data stream, and last वाला non-deterministic TM, right. So this is all about various variations or types of what, Turing machines. So इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में चलेंगे
और एक नए theoretical टॉपिक के साथ. So that's it for this session. Thanks for the watching. Keep studying, keep problem solving. Thank you very much.